लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए रविवार को टेक्सास के डलास पहुंचे। यहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट्स से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बात। राहुल गांधी ने कहा, भारत में रोजगार की समस्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, सिर्फ 1-2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। कार्यक्रम में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी अब पप्पू नहीं है, वे पढ़े लिखे हैं और किसी भी मुद्दे पर गहरी सोच रखने वाले स्ट्रेटेजिस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स, which is written in our constitution. And so you have a very important role, because the relationship between these two unions is going to determine the future of both these unions. The United States needs India and India needs the United States. It's a fact. We cannot get away from it. So you have a very important role of being the bridge between your old home and your new home. Right? And in my view, you should travel freely between these two homes, and you should bring the idea of India to the United States and the ideas of the United States to India. Sam said that I had promised that I will go to Dallas. And it's true. But I would like to say that our trip was supposed to be longer, and we were supposed to go to New York, Washington, California, and Texas, and Chicago. And then we had to shorten the trip. And so I told Sam, look, I have promised the people of Dallas, so we have to go to Dallas. And so we included Dallas in our itinerary. And I think it was a very good idea. 100%. We'll come to Chicago. Love you. And we included Dallas. And I think it was a very good idea because Dallas is thriving. Texas is thriving. A lot of technology is moving here. And I can see that all of you are doing a tremendous job in raising the flag, raising the Indian flag here. So I'd like to thank you. And I'd like to also tell you that it's important that the ideas you carry of humility, of affection, of respect, you spread them in our community here and also among the people of India.